Hello guys, this is ZK and today I'm gonna let you know that how to travel by the subway in China. Currently I'm in Beijing and I'm trying to find some nearby subway station, so keep in touch with me. It's so important to use the traffic lights. You must follow the traffic lights and the traffic rules in China, because if you don't, then you must be in trouble. So always, even if you are in your own country, you must follow the traffic rules. So here we are waiting for the traffic signal to turn green, then we can cross the road. So here the traffic light turns green, so let's go. So guys, I think I've found a subway station, and the subway station name is Pingliyuan Station. So let's have a look. Yeah, Pingliyuan Station is here in, I don't know about the district, but it's a Pingliyuan Station. Let's go inside. You can see here are the signs like how do you go the way. So keep moving. Actually they have managed everything very nicely. Everything is like the exit where we entered from now to subway. Here we can see like two indications. The first one is the tickets and the second one is to subway. So we're gonna go to the subway because I have the subway card. I can use the card. So let me take my card out of my phone's pocket. Yeah, here we are. This is my subway card. Here we go. The traffic check. So here we are to the subway, and here are the walkthrough. I'm gonna use my card. I'll put it up here. It's open, and here I go. I'm going to the subway now. So this is basically the card. You can use all over in China. It's not only for the Beijing. You can use it everywhere in China actually. So every subway station they have kind of map here on every subway station. What you need to do is just to find the map, and then you need to find like where you want to go. Currently I'm here like Pingliyuan, and I want to go to Jiuhong. So I'm here. I'm gonna take line 10, and then I'll go to line 5 connected, and then from here I'm gonna take Yizhuang line, the pink line, and 1, 2, 3. After 3 stops, I'm gonna get to my destination, Jiuhong. You can also find this, the map on the subway line. So we are here at the Pingliyuan, and after 2 stops, we're gonna connect to the line 5, like 1, 2, 3 stops, and then we'll connect to line 5. From there, we can take line Yizhuang. So guys, here is our subway is arriving. There it is. We need to wait for the door to open, and then we can enter. The train looks kind of empty because there are not much passengers inside. So let's get in there.
तो यहाँ पे जब भी आप किसी सबवे में एंटर होते हैं तो ये लाइट्स आपको इंडिकेट करती हैं कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, और हर लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप किसी भी लाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपने जब भी एंटर होना है तो इस पर नज़र रखनी है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लाइन 10 के स्टॉप पे पहुँचने वाले हैं, शीलिफ स्टेशन पर। तो यहाँ पे हमने उतर के लाइन 10 पे जाना है। अच्छा, काइंडली अब जब भी सबवे में सफ़र करते हों तो जिस डोर पे ये जो लाइट जो है ब्लिंक कर रही है, इसका होता है कि आपने इस लाइट को फॉलो करना है और यही डोर आपको एग्ज़िट करवाएगा। So here we get off the subway. Now we're gonna connect to the line 10. Here is the line 10. So they have signs like how and where do you need to go to connect to the other line. So here we go to the line 10. Oh, it's a long way, so I'm gonna be quiet for a while. Here you can say on our right we can find to subway line 10. So here we go on the right, and there is another signboard. We need to take left, and then there it is. Go to find line 10. Usually you can see that here all the people are in such a hurry, because here people work twice or three works in a day. Like, they love working because they have to save a lot of money, because in China if they don't work enough they would find a lot of difficulties in their life. So here is line 10 on our right. Let's go to the right. Okay, there it is. You can see. Right, let's go right there. We are. There you go. So now what we need to do is find that there is a big sign to right to the left. Big sign. I'm gonna go to the line 5. So let's see. Yeah, so here we are, and our next station is. So we are currently here, and we need to go to the Songjiazhuang. So here you can see that currently right now we are here at Xilihe, and after 2 stops we're gonna get to the Songjiazhuang line 5 and the Yizhuang line. From there we can connect to the Yizhuang line. So here is ZK. तो इधर हमारी आ रही है सबवे लाइन 10। ये ट्रेन पहुंच रही है यहाँ पे, और there it is. So अब हमने जाना है ट्रेन के अंदर और 2 स्टॉप ट्रैवल करना है, फिर उसके बाद आगे हमने लाइन 5 के साथ कनेक्ट कर लेना है। Okay, here we go. So here we are.
Now we are here. They are Shiluhu, and we're gonna get to the Songjiazhuang. जी तो अभी हम पहुंच गए हैं लाइन 10 से। अभी हम निकले हैं और अभी हमने ढूंढना है, जैसे कि हमने मैप में देखा था, अभी हमने ढूंढना है यीजुआंग लाइन। यीजुआंग लाइन हमें कनेक्ट करेगी हमारे स्टेशन से, जिस स्टेशन का नाम है जोगोंग। तो फॉलो करते हैं साइन बोर्ड को। साइन बोर्ड, हमने जाना है अपने दाएं तरफ, तो जाते हैं दाएं तरफ। हमने जाना है यीजुआंग लाइन, यीजुआंग लाइन। There it is, Yizhuang line. लोकेशन की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मैप है। इस वक्त अभी हम यहाँ पे हैं सोंगजियाचुआंग। हमने शाओसुन पे जाना है, फिर शाओहोंगमन स्टेशन पे जाना है, और फिर उसके बाद हमें जाना है अपने स्टेशन पे जोगोंग। Here is the train. कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे लाइन थोड़ी छोटी हो, ताकि हम इजीली जो है ना ट्रेन में एंटर हो जाएं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं नज़र आ रहे, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। ट्रेन यहाँ पे पहुँच रही है, लेकिन दूसरी साइड से पहले पैसेंजर उतरेंगे, क्योंकि यही ट्रेन वापस जाएगी। ये इसका आखिरी स्टॉप होता है। तो जैसे ही ट्रेन खाली होती है, फिर ये वाले डोर्स खुलेंगे और यहाँ से पैसेंजर एंटर हो जाएंगे। As you can see, the train is empty now, so all we need to do is wait for the doors to open, and then we can enter in the train. The train is almost empty because this is the last stop, and this train is going to go back to the Yizhuang station. So currently we are here at Songjiazhuang, and the next station is Shaosun, and then Shaohongmen, and then our destination is Jiaogong. So this is gonna take almost like 10 minutes, so we need to keep in touch. So here we are. We're gonna get off the train. We arrived at the Jiaogong station now. Let's go. So we need to go by the exit B, because B is the closest one. So we'll go by the B. So guys, this is how we use the subway in China. ये तरीका है कि चाइना में हम सबवे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है कि जब भी आप सबवे में एंटर हों, तो आपने नज़र रखनी है मैप पे, कि मैप पे क्या चल रहा है, आप कौन से स्टेशन पे जा रहे हो, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, और आप करंटली कौन से स्टेशन पे हो। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। परेशान होने की कोई बात भी नहीं है। कोई भी कंट्री हो, वो फॉरेनर्स का बड़ा ख्याल रखता है। तो अगर आप गुम हो भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली जो है अपनी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट।